Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining portion of binomial nomenclature. So let's move to the glassboard. So binomial nomenclature. The previous lecture we have started this topic. So I told you that it is a system which was introduced by Carolus Linnaeus or Carolus Linnaeus in the 18th century. Basically, इसका मकसद ये था कि it was to solve the confusion of the common names. So initially, in the early ages or in the earliest times, the plants and animals were given names under no system. Hence, different regions the people give them different names or common names. So that very common names, what is the problem with them? The problem regarding giving common names so the problems was as the common names have no scientific basis, so it had caused long confusions among various plants and animals. तो बहुत लंबे अरसे तक इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रही इनकी वजह से, कॉमन नेम्स की वजह से. So there were different, organism is same, but the names are different according to various languages or according to various regions or geographical areas of the earth. The organism in the world is same, but it was called with various different
names on the basis of language being spoken in various regions of the world. Clear? For example, we take the case of this thing. तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इसको पहचानते हैं, मैं भी इसको बहुत अच्छे से पहचानता हूं. So what is this thing? It is onion. Clear? The example here, the first example is onion. In onion in English, clear? In English, it is pyaz. In Urdu, it is wassal. In Seraiki, also it is called by basal, etc., etc. So the organism is common. एक ही ऑर्गेनिज्म है. आप हर कोई इससे अपनी वो कुकिंग करते हैं, उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ बेसिक इंग्रेडिएंट. लेकिन इंग्लिश में हम उसको अनियन कह रहे हैं, उर्दू वाले उसको प्याज कह रहे हैं, कहीं पे उसको वसल कहा जा रहा है, कहीं पे उसको बसल कहा जा रहा है, कहीं पे उसको डिफरेंट नेम्स. सो देयर आर more than 4,000 languages being spoken all over the world. 4,000 से ज़ायद मुख्तलिफ ज़बानें दुनिया में बोली जाती हैं, लेकिन सब खाते तो हैं इसको. सो हर लैंग्वेज में इसका एक मुख्तलिफ नाम है. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ लाइक द ब्लैक बर्ड. The blackbird. So basically blackbird, दो परिंदे हैं, उनको कहा जाता है, and there is a similarity between them. Crow and raven. Crow and raven. एक तो सिंपल कवा जो हमारे इलाके में होता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर नेक के ऊपर वो थोड़ा सा यानी कि लाइट कलर होता है, बाकी वो सारा ब्लैक होता है. और रावण भी कवे की ही एक किस्म है, लेकिन वो उसमें साइज में थोड़ा बड़ा होता है और उसकी जैसे वो टोटली ब्लैक होता है, उसकी चोंच भी बड़ी होती है. आमतौर पर हम उसको टोडर का भी कहते हैं पंजाबी में. सो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है. द बोथ ऑफ दिस बर्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन कॉमन नेम इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, दैट इज ब्लैक बर्ड. तो दैट इज अ कन्फ्यूजन कि भैया मैं कहूँ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वर्ड ब्लैक बर्ड. अब ये नहीं पता कि मैं क्रो के बारे से बात करूँ या फिर रावण के बारे से बात करूँ. इसी तरह से अब bluebells. So bluebell, it is the shape of the flower, a blue colored flower, and it is bell in shape. इस तरह से bluebell. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर ब्लू बेल्स की तरह की होती हैं, ठीक है. उनकी कलर भी और उनकी अपीयरेंस भी वो एक जैसी होती है. सो सेम नेम बट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और कंफ्यूजन क्रिएट होगी. लाइक एज यू नो व्हाट इज आवर फिश. सो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी फिश किसे कहते हैं पता है आपको? वर्टिब्रेट. इट इज ये वर्टिब्रेट है सबसे पहले चीज. इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है. क्लियर. नंबर 2, इट पोजेस गिल्स. इसके यहाँ पर गिल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिससे ये रेस्पायर करता है. इट हैज गॉट द स्केल्स एंड फिन्स. क्लियर. तो ये इस तरह का कुछ हमारी जब भी हम फिश की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की शक्ल या इस तरह का इमेज हमारी जो ब्रेन है उसमें बनता है, लाइक दिस. सो दैट इज
what we call a fish. ठीक है, कुछ इस तरह से जहन में आइडिया बनता है। लेकिन अंग्रेजी की जुबान के अंदर इन इंग्लिश तो इस तरह के कुछ नाम हैं जो कि फिश की कैटेगरी में तो किसी भी तरीके से उतरते नहीं। अब चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया में देखेंगे, ठीक है, लाइक क्रे फिश, ये तो फिश ही नहीं है, ये तो लॉबस्टर की तरह का कोई एक वो ऑर्गेनिज्म होता है। आपने देखा भी होगा, आम उर्दू उसको झींगे भी कहते हैं, झींगे, ठीक है, इस तरह से। लाइक दिस, और इसके बड़े बड़े इधर से वो पिंसर क्लॉज होते हैं, ठीक है, इस तरह से। सो इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ क्रेफिश। तो ये कहीं से भी आपको फिश नजर आ रहा है किसी भी कैटेगरी से? सबसे पहली बात तो ये इनवर्टिब्रेट है, बात ही खत्म हो गई कि ये वर्टिब्रेट है ही नहीं, कहीं पे गिल्स नहीं नजर आ रहे, कहीं पे इसके फिल्स नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्रेफिश है, ये तो फिश है, तो फिश मतलब ये उस कैटेगरी में तो फिशेज में आता ही नहीं है। इसी तरह से एक और नाम विच इज रिटन इन आवर बुक, दैट इज सिल्वर फिश। तो आप सोच रहे होंगे कोई मछली है जो कि सिल्वर कलर की है? नो, सिल्वर फिश इट इज अ कॉमन नेम फॉर एन इंसेक्ट। वो कुछ दिखने में इस तरह से लगता है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा स्टारफिश, नाम सुना आपने? सो व्हाट इज स्टारफिश? हैव यू ऑब्जर्व्ड? आगे चल के चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, उसमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये तो उससे बिलोंग करता है। स्टार शेप्ड इस तरह से ये एक एनिमल है दैट बिलोंग्स बेसिकली टू, दैट्स एन इकाइनोडर्म। ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। तो ये किसी भी तरह से फिश है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से जेलीफिश का नाम सुना होगा आपने, जेलीफिश नाम सुना आपने? तो वो किस तरह से होती है स्टूडेंट्स? इस तरह से राउंड बॉटम, बेल लाइक स्ट्रक्चर एंड हैविंग टेंटेकल्स लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह से इसकी शेप होती है। तो ये कहीं से आपको फिश नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ना तो इसकी वो आइज़ हैं, ना ये वर्टिब्रेट है, ठीक है। सो ये चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इसको क्लियर करते हैं। ये फिश है ही नहीं, जेलीफिश जो है इट्स नॉट अ फिश, क्लियर। सो नाम के साथ क्या लगा हुआ है? क्रे फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेलीफिश। सो रादर दिस आर नॉट फिशेस। तो फिश तो ये है बायोलॉजिकली। इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉन्ग कन्फ्यूजन, इसने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर दी इस तरह के नामों ने, कॉमन नेम्स ने। तो इसी कन्फ्यूजन से निपटने के लिए फिर जो कैरोलस लिनियस है उसने 18th सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस कराया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिर दो नाम दिए गए, और आमतौर पर लैटिन वर्ड, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा इनका लातीनी जुबान लैटिन में होगा, और दो नेम्स, द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, ठीक है, और सेकंड नेम इज द स्पीशी नेम। उसके कुछ रूल्स भी आपसे शेयर किए थे, ठीक है। सो दैट वाज द पर्पस, द सिग्निफिकेंस। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं इसको, पर्पस भी कह सकते हैं। पर्पस ऑफ क्रिएटिंग binomial nomenclature. So the significance lies in the sense, the सबसे basic significance था, the basic purpose was that the basic purpose or the basic significance was to limitize का मतलब है कि उसको कम कर देना, उनको ख़त्म कर देना, और टू एंड द लिमिटाइज द कन्फ्यूजन्स regarding the common names of organisms and giving them
a standard name of two words which is accepted internationally. Clear? जैसे आपने देखा ऐसे यूनिट्स पढ़े हुए हैं आपने, तो जो है लेंथ है उसका ऐसा यूनिट आपने पढ़ा है, दैट इज मीटर, ठीक है। उसमें और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होंगे, दैट इज अंडरस्टूड। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होंगे, ठीक है। सो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये एक कानून बना दिया गया। इसी तरह से बायनोमियल नोमेनक्लेचर में भी मैंने आपको बताया था कि ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था 18वीं सदी में। किसने? इन 18th century. So he prepared the Carolus Linnaeus prepared a list of plants in 1753 and allotted them the scientific names. And in a very short time, this system became very famous. And he prepared another list of animals in 1758, उसके 5 साल बाद। एनिमल्स की लिस्ट 1758 में, प्लांट्स की लिस्ट 1753 में। ये एमसीक्यू उसके लिए उसके एतबार से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी बेसिक सारी जो इसमें चीज़ें थी, रोल्स थे इसकी सिग्निफिकेंस के वाले से। सो उसमें टू लिमिटाइज, उसमें एलिमिनेट, इसको आप एलिमिनेट भी कह सकते हैं, एलिमिनेट द कन्फ्यूजन्स, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब इंटरनेशनली, अब चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में प्याज को जो मर्जी बोलें, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एलियम सीपा, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर कोटेड। ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट है उससे बहुत अहम है, ठीक है। आपने उनको अच्छी तरह से याद रखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, ठीक है। राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको 2 या 3 या 4 ऑर्गेनिजम्स का नाम दे दिया जा सकता है, उसके अपने साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम से लिखने होंगे। लाइक इन केस ऑफ ऑनियन, सो इट्स साइंटिफिक नेम इज एलियम सीपा। Clear? As it is scientific name, it must be underlined. Number 1. फिर इसी तरह से एक आपने पढ़ा था अभी कॉर्न का in the previous lectures, Z maize, Z maize. Clear? इसी तरह से of the amalthus, इसका भी जिक्र है। इसके अमलतास के भी कुछ कॉमन नेम्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। at this point over here, amaltas and argvad and gurmala and pershing acacia and golden shower. और डियर स्टूडेंट्स, ये सारे नेम 1 2 3 4 5, ये सब के सब नेम एक ही प्लांट के हैं, ऑल ऑफ दिस, एंड दैट इज अमलतास, ठीक है। ये अमलतास का नाम है। इट्स साइंटिफिक नेम इज केशिया फिस्चुला, क्लियर। एंड likewise another name
is of potato, that is Solanum tuberosum, and brinjal, its scientific name is Solanum melangina. Clear? And of the humans, वो तो आपको पता ही है, Homo sapiens, so these are the few examples related to this. इसी तरह से आपने वो फ्रॉग का भी पढ़ा हुआ है, रैना टिग्रीना, इस तरह आपने और भी बहुत सारे, जैसे आपने वो पढ़ा था पीप का, दैट इज पाइसम सेटिवम, ठीक है। इसी तरह से आगे चलकर भी आप बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मुख्तलिफ तरह के फंजाई के अंदर भी उस्टिलागो ट्रिटिसी एंड उस्टिलागो मेडिस, मुख्तलिफ तरह के ये उसके स्पेशीज हैं, क्लियर। सो दैट वाज रिगार्डिंग द शॉर्ट एज वेल एज द MCQ's point of view. It is very much important. So dear students, hopefully you are able to understand why binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. So hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।